हाय गाइस, मेरा नाम है तान्या और मैं हूँ एक इंडियन टूरिस्ट यूएस में। और इस वीडियो में मैं पहली बार अपनी खुद की कार रेंट करने जा रही हूँ यहाँ पे। बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता कि even if you are on an Indian license and you don't have an international license, by law you can actually drive in the US and that will allow you to come to places like these, Carmel-by-the-Sea, जहाँ पे मैं अभी हूँ, and I'm enjoying the sunset because I drove down to this place. But in this video I'm also going to tell you how you can do it. Hi Wilson. Hello. I'm back in again. Yeah. And I just wanted to ask some questions before we rent the car. Yeah, sure thing. Especially about, so we are taking like a full-size Nissan Altima. That is right. Model 2019. Model 2019. But I just wanted to double check about insurance because I don't have any local insurance here. Gotcha. So what do you recommend out of these? So actually, as a Hertz employee, we recommend the best package. So the best package, you are covered the car by 100%. So anything that happens to the car, you just walk away. Okay. And at the same time, you have liability insurance. This is called waiver when you cover the car 100%. That is right. And this is called liability. What is liability exactly? So liability insurance is, for example, if you hit something or like a property, you have liability insurance. So for example, if the third party is like asking for like a insurances or something. Okay, so that amount is going to be covered entirely if you take it. That is right. So how much does it cost individually? So individually, there are like different packages. So it really depends on the car that you will have. So because you will have an Altima, the waiver is $17 per day. $17 per day. And the liability insurance is $17.58 per day. $17.58 per day. And roadside assistance is? Roadside is $8.99 per day. And I think all of these are pretty important if you especially do not have any local insurance or you're not covered locally. Especially getting roadside assistance, because that way if you have any mechanical damage, any tire problem, any issue at all with the car, you just call roadside assistance and then you're covered. You don't have to worry about anything at all. So these things are pretty important, especially if you're a tourist and coming and driving locally. Is that correct? That is right. Yes. That's the right thing to do. Okay. Lots of calls coming in for you. All right. Thank you. Have a good day. Thank you. Thank you. I'll see you next week. See you next week. Good day. Good day. So the cars in the US have an automatic driving system, which means no gears, and you can use just one foot for driving. Mushkil nahi hai, but it just takes time to get adjusted to it, and also the driver's seat is on the left side as compared to India, which is on the right side. Okay, so far so good. मुझे थोड़ी आदत हो चुकी है. Now it's coming a little more automatically to me. पता है एक और प्रॉब्लम क्या होती है जब तुम राइट साइड पे चला रहे हो ना. So now you have an idea of तुम्हारे इस साइड का, क्योंकि तुमने लेफ्ट साइड ड्राइव पे चला रहे हो तो तुम्हें गाड़ी का उस साइड पे आइडिया होता है, इस साइड पे आइडिया नहीं होता. So this side you have to be very careful कहीं ऐसा ना हो कि you end up banging somebody on this side because तुम्हारा गाड़ी का पूरा ओरिएंटेशन चेंज हो गया. पर मैं फट रही है थोड़ी चलाने में यहाँ पे, सच कहूँ तो. Stop sign. You have to stop completely here. Stop sign पे पूरा stop करना पड़ता है. फिर देखो जब कोई आ नहीं रहा तो you can go. 25 है. I'm inside the speed limit, don't worry. सीधा ही चलना है ना अभी. तो क्या है ना कि अगर आप इंडिया में ड्राइव करते हो, your driving over here is bound to be pretty bad because the rules over here are very very extensive, right from the markings on the roads to the lanes that you can be in to giving a stop to people to priority. यहाँ पे pedestrians को 100% of the times priority मिलती है unless there are signals that guide them. So, which is why if you're driving in the US, you have to get something like this from the DMV. I am driving in California, so I have the California Driver Handbook. And I basically have to read this entire book और मुझे ये book को चाटना है before I leave on this road trip so that I can be sure of what I'm doing and whether or not I'm following all the rules. Otherwise, I will end up getting a ticket and my visa status can get affected by that. So we are starting off with our road trip. In fact, we've already started off with our road trip. It's Freeway 101 and we are headed south. And with this, we'll keep you posted about this trip and about our first destination, Monteray.
कैलिफोर्निया में आपको जो गैस है वो खुद से भरना पड़ता है. सो वी आर एट अ गैस स्टेशन राइट नाउ. एंड यू नो इंडिया में कितनी फैसिलिटी होती है दैट वे कि आपके लिए कोई भरता है गैस, लेकिन यहाँ पे यू हैव टू फिगर इट आउट योरसेल्फ. तो सबसे पहले तो यू नीड अ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड. ठीक है, यस, ऐसा लग रहा है जैसे मैं एटीएम से कैश निकाल रही हूँ. फिगरिंग दिस आउट वॉज सच अ हैसल. मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि फ्यूल करते कैसे हैं, लाइक नोजल कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे फ्यूलिंग बिगिन होगा, ऑल ऑफ दैट. बट फाइनली आफ्टर फिगरिंग इट आउट फॉर अ व्हाइल आवर कार इज गेटिंग फ्यूल्ड अप नाउ. Doing this for myself for the very first time in my life, so this is quite an unusual experience for sure. और अभी हम लोग डलवा रहे हैं $50 का फ्यूल. हाँ, तो बाय द वे हमारे पास ना जब कार रेंटल के टाइम पे 2 चॉइसेस थी, तो हमने निसान ऑल्टिमा इसलिए ली बिकॉज दिस इज लाइक अ मोर फ्यूल एफिशिएंट कार. इसके सिवाय हमारे पास एक किया कार का ऑप्शन था, बट वी केम टू नो दैट दिस इज मोर फ्यूल एफिशिएंट, इसलिए वी टुक दिस ऑफ कोर्स. ओह, एंड हमारा $50 से कम लगा, 41.56. तो हम लोग मॉन्टेरे पहुंच चुके हैं एंड ये हमारी फर्स्ट एवर डेस्टिनेशन है हमारी सोकैल रोड ट्रिप की. अभी यहाँ पहुँच के थोड़ा सा एफर्ट मारना पड़ा पार्किंग सिचुएशन फिगर आउट करने के लिए, विच इज क्वाइट अ मेस एंड वी हैड टू स्पेंड सम एक्स्ट्रा मनी टू पार्क आवर व्हीकल. Excuse me, are you from around here? No. Oh, but do you know how do we pay for this parking? Coins? Some coins? What about cards? Card is here. And how do we like add the time and everything? You put your card and then you put more time. Okay. And then you press OK. Okay. And it's okay for this parking. All right. Thank you. Have a good day. You too. Okay, so we have to figure this out. Okay, total 4 hours. 4 hours? Less. 3 कर लो. यार इसमें authorizing already आ गया. Approved 4 hours. Why did I do this to myself? उसने ऑटोमेटिकली 4 आवर्स ले लिया. मैं क्या करूँ, मेरे कार्ड को $6 चार्ज कर दिया उसने. $6. बट एनी वे वी कम टू अ वेरी नाइस रेस्टोरेंट ओवर हियर और यहाँ पे वी आर सिटिंग ऑन लिटरली द बेस्ट टेबल इन द हाउस क्योंकि व्यू बहुत अच्छा है. एंड उसके साथ साथ आई एम ईटिंग सम क्लैम चाउडर. क्लैम चाउडर अगर आपको नहीं पता, इट्स लाइक अ सी फूड सूप जिसमें शेलफिश यूज़ होती है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के समुद्री जानवर प्राणी यूज़ होते हैं. इट्स लाइक अ सूप एंड यू नॉर्मली ईट इट विद ब्रेड एंड इट्स स्टिल डिलिशियस. सो अगर हम एक सी टाउन पे हैं, ऑब्वियसली वी हैव टू ईट सम क्लैम चाउडर व्हाइल एंजॉयिंग दिस ब्यूटीफुल व्यू. और नम्रता यहाँ से अभी तक का ड्राइव कैसा था? अमेजिंग था, है ना? तान्या बहुत मस्त चलाती है. वैसे मैंने ये कॉम्प्लीमेंट सुनने के लिए नई वीडियो बनाया, बट No, but it was really nice. We followed all of the rules. Maybe one place we did ना. oh shit yeah, oh yes. Yeah. हम लोग एक जगह में बिल्कुल फंस गए थे because we So had some to. exits have a lane, like a designated lane for exit. Some And if you're on that lane, you are going to be headed towards that exit. वो कई बार Yeah. पता नहीं चलता, तो you have to be in the other lane
so that you don't enter the exit lane. हाँ, तो तो हम लोग काफी डाइसी सिचुएशन था वो. और बिल्कुल हम लोग एंड जहाँ पे एग्जिट था उसके बिल्कुल Doggy एंड भी तक क्या? जाके डर गई, हम भी आता था वो तेरे ऊपर. कुछ नहीं करेगा. तो हम लोग बस उसके एंड तक जाके ऐसे मुड़े, बट अदरवाइज आई थिंक ओवरऑल इट इज अ गुड एक्सपीरियंस. आज हम लोग बस अपने एयरबीएनबी जाने वाले हैं. इट इज अ वेरी इजी ड्राइव. Hi guys. Okay, super important and last point. यहाँ पे जो navigation app which is mostly used, and of course you have to also wear your seat belt because seat belt के बिना चलान कट सकता है आपका. मतलब you may get a ticket. हाँ तो the one app which is very important and you should download as per US standards क्योंकि यहाँ पे Google Maps के सिवाय वो app चलती है. And which app is that, Namrata? It's called Waze. एक बार दिखा भी दे. Yeah, it's spelled as WAZE. I don't know if you can see. Yeah. So it's gonna show you all the routes that you select. For example, which highway you select. तो उसके हिसाब से दिखाएगा ट्रैफिक कहाँ है. If there's a car parked around and you need to navigate accordingly. Yeah. If there's a crash anywhere, like I think it's a bit better than Google. I tried this the first time I'm trying it. Yeah. मतलब Google तो Google है, I agree, but if it's a little bit better than Google. हाँ यहाँ पे at least it's For- considered better yeah, for हाँ. US. So for US you should definitely download this app and we will have to start navigating very soon because अभी अंधेरा हो रहा है and we don't want to get late. So where are we? We are going to our Airbnb. Okay guys, so हम लोग हमारे Airbnb में आ चुके हैं. This is a little far away from Monteray because we found the cheapest deal at a town called Salinas. So यहाँ पे at first started making some chai because we wanted to drink something hot. बहुत ठंड है बाहर. But यहाँ पे we are also making some Maggi for Namrata. Hi Namrata. Yay. So my Maggi is getting ready. That is my dinner. We also have some fresh carrots and Greek yogurt over here जो हम लोग ने ये सारी ग्रोसरी कल ही करी थी. And we're also making chicken. अब ये defrost हो रहा है इसलिए ये पानी में पड़ा है. I think अब तक defrost हो चुका होगा. So while we do have access to the whole kitchen, हमें इस किचन को पूरा साफ भी करना पड़ेगा यूज़ करने के बाद. तो यहाँ पे हमें डिशेस करनी होंगी. ये जितना मैंने फैलाया है सारा खाना यहाँ पे उसको मुझे क्लीन करना पड़ेगा. All of this chicken which I'm going to cut currently and cook. So this is as a courtesy to the hosts, and they've already mentioned this in the house rules while we were booking this Airbnb. तो इतना तो करना बनता है. So guys, chicken is ready. Namrata, thoughts? I'm excited. I'm excited too क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से चिकन बनाया है. काफी मेहनत लगी. और अभी हम लोग बैठ के खाएंगे और चखेंगे. I think at least 6 मसाले. Oh wow. You have like a seasoned and flavored chicken. Yeah, देख मैं तो already cheating करके खा चुकी हूँ. मुझे तो बहुत पसंद आया. So you try it, फिर भी कैसा लगा? So good. Must have. Pepper curd chicken recipe. Even yogurt is there. I forgot about the yogurt. So with this guys, हमारी road journey का पहला पड़ाव खत्म हुआ. I hope you've understood कि US में road journey कितनी complicated होती है और कितनी easy होती है. I hope we've broken it down for you well enough. And with this, we are going to end this video currently. Stay tuned, and I hope you enjoy this series क्योंकि हम लोग को तो बहुत मजा आने वाला है शूट करने में इसे. शूट करने में, रोड ट्रिप में, खाने में. True feeling of independence आ रही है. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम adulting along with this road trip. So cal local. So क्या look. खत्म करें वीडियो को? Yes. Okay, cut it. Bye.